सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लिनक्स ट्राई करने वाले हैं ऑन माय फेडोरा लिनक्स डेस्कटॉप। सो हियर वी आर ऑन आवर डेस्कटॉप। सो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट लिनक्स हो सकता है। सो लेट्स सर्च इट ऑन लाइटेस्ट लिन व्हाट आई एम डूइंग राइट, लाइटेस्ट लिनक्स ISO. Yes, that's what we are going to do right here. So मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, लाइक एज यू कैन सी अभी मैं ढूंढ ही रहा हूँ यहाँ पर। सो लिनक्स के लाइट वर्जन भी बहुत, लाइक एज यू कैन सी ये गीगाबाइट्स एंड मुझे बहुत लाइट लिनक्स चाहिए, लाइक अंडर 100 MB. सो लेट्स सी अबाउट दैट. So we can see here best low memory Linux distro. यहाँ पर जाए कि नहीं जाए, यहाँ पर देखते हैं. ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लिनक्स. नीचे स्क्रॉल, अल्पाइन लिनक्स, रैंचर OS, DSL, SliTaz. सो SliTaz caught my eye. टाइनी कोर लिनक्स तो CLI में, मेरे को GUI में चाहिए, बट वील सी इट. लाइक देख लेते हैं करना क्या है. So tiny core, I have already tried it once. CLI interface में आता है ये. Pretty confusing download page right here. So भाई ये उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है. It's a basic Linux distro in C command line interface. So शो रिलीज है, देखते हैं. बहुत सारी चीज़ें तो हैं पर बट नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट because I want it in CLI, not in GUI. So again ये मैंने देख लिया था, SliTaz GNU Linux. So यहाँ पर rolling 32-bit and 64-bit है. So we are going to download the 64-bit of course. यहाँ पर I guess मैंने डाउनलोड किया था. हाँ, like yes, I have already downloaded it. So let's open the virtual machine app on a Linux, and here we are on the boxes right here as you can see. यहाँ पर हम like installed from a file करते हैं. डाउनलोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार देख रहा हूँ मैं. ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लिनक्स है इफ़ यू वांटेड फ्रॉम हेयर. नाइस नाइस नाइस. सो लेट्स क्विट दिस एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल फ्रॉम अ फाइल. एंड डाउनलोड्स में जाकर हमें चूज़ करना है SliTaz रोलिंग कोर ISO, एंड देन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इट. लोड हो रहा है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड है, वियर्ड. ओके, ऑथेंटिकेशन, अपना पासवर्ड टाइप कर दूंगा मैं जल्दी से. जल्दी से टाइप हो जाए, देन वी आर गोइंग टू सी. ओके ओके, दिस इज कोड एक्चुअली. So everything is being checked right here as we can see. So अभी तक तो सब कुछ ओके ओके आ रहा है. We'll see in a minute what's going to happen. तो 4 मिनट हो ही चुके हैं. ओके, दिस इज हैपनिंग. कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. Trying to come unpack root. ओके, root fs unpack हो रहा है from the ISO. So we are going to wait. So इसके बारे में कुछ देख लेते हैं. So ये Linux 55 MB में आता है. You heard it right, 55 MB अल्ट्रा लाइट है ये, और बहुत जल्दी बूट भी हो जाता है. बट एज वी आर रनिंग अ वर्चुअल मशीन, आई हैव लिमिटेड इट टू ओनली 2 GB ऑफ रैम. सो ऑफकोर्स टाइम लगेगा थोड़ा, बट इट्स ओके. एंड अब देख ही सकते हो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, मेरा macOS का थीम इज ऑलरेडी वेरी ग्रेट. But we will wait until this boots, and then we are going to try to
discover what's there, and also we are going to try to run one program that I will show you in a minute. So, okay, processing task pkg upg. So the program that we are going to run is obviously good old C मैट्रिक्स. तो हम SliTaz के अंदर C मैट्रिक्स रन करने का ट्राई करेंगे. एज यू कैन सी हियर, ये हम डाउनलोड करके रन करने का ट्राई करेंगे. आई डोंट नो if it will work or not. Okay, so we have booted into SliTaz rolling ISO right here. It's a bit laggy and choppy. Frame cuts for and stuff यहाँ पर है. Properties में देखा जाए तो we are connected with the Ethernet virtual machine है. एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स हैं. इंटरनेट, लेट्स सी, टाज वेब ब्राउज़र देखते हैं क्या है. ओके, इट क्लियरली वर्क्स लाइक गुड. लेट्स गो टू यूट्यूब आई गेस. नो, लेट्स ट्राई गूगल. ओके, इट boots up into Google. Very great. Now we will try to go to youtube.com. So let's go. It is loading right here. टॉप बार में दिख रहा है कि YouTube का कितना लोड हो रखा है. ओके, एंड इट वर्क्स. YouTube भी लोड हो गया सक्सेसफुली. इट इज़ ग्रेट बाय द वे. YouTube भी लोड हो रहा है. एवरीथिंग वी हैव डॉक्यूमेंटेशंस of the ISO, of course, of the operating system. This operating system is great for potato PCs basically that run on 32 MB RAM, not 32 gigabytes. By the way, I have a 16 gigabyte PC, so everything runs pretty smooth on here with a 1080p recording at 60 FPS. So कुछ like सी बहुत ज़्यादा ही चॉपी फील आती है इस लिनक्स में. एज यू कैन सी, गूगल सर्च एक्सेस में बहुत सारे ट्रबल्स भी फेस करने पड़ते हैं. एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट एज पॉलिश्ड. सो वी आर गोइंग टू सी. ओके, रेसर नाम का गेम है. लेट्स ट्राई दिस. ओके, लोड हो रहा है गेम. दिस, व्हाट द हेल द गेम इज दिस. इसके फ्रेम्स, डैम ब्रो. बट ओवरऑल इवन फॉर अ पोटैटो पीसी ठीक ही है भाई. एंड लेट्स सी द डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंट्स, ओके, ट्रैश एप्लीकेशंस में ऑफिस ऐप्स हैं, डेवलपमेंट्स ऐप हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम टूल्स रन, बेसिकली बहुत कुछ है इसमें. विंडोज 7 वाली फील है बेसिकली. वेरी वियर्ड. एंड वी हैव और यहाँ पर हम, ओके, सो ये whatever it is, we are going to, I'm searching for this. Yes, terminal. We have xterm. Okay, we are now into the terminal. Now we will see sudo works. Okay, sudo, we have sudo. So let's see how we can install like C matrix here. So सबसे पहले तो wait, Zen browser खोलना. We will search क्या कैसे इंस्टॉल कैसे करना है हमको. So let's see what is the install command in SliTaz Linux. Okay, let's see. SliTaz install. What the hell? नहीं. Package, yes, package installer. Taz pkg install. Okay. So we have to do Taz pkg. So let's try it. Taz pkg करेंगे. Taz pkg install. Taz pkg. Okay. So we are here. So we'll try to go to root. What's the password? भाई password क्या है इसमें? We weren't like documentation में password होना चाहिए क्या?
weird shit because we weren't introduced with the password when I downloaded this ISO. Like ऐसे ही करने का ट्राई करते हैं. You must be root to execute the command. Okay. Firstly, root में जाए कैसे? How to get in root in SliTaz Linux. VM of course. Open terminal. External में हमारे पास अभी right now. Okay, let's go to the. यहाँ पर डाल देते हैं. Root में जाना है हमें. शो करेंगे. Password. Okay, so the password was क्या था password? So wait, we are in the root boys. So अब यहाँ पर हम इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं taz pkg install c matrix. Okay, what? So I guess this is not working. Weird, very, very, very weird. This is pretty tough. CLI में एक बार ट्राई करें. We will try it the next time with tiny code Linux. So एक और बार कमांड रन करके ट्राई करते हैं C matrix. There is nothing is happening basically. Starting. So भाई this was it for today. भाई बहुत माथा पीट लिया मैंने इंस्टॉल करने को. So hope you have a great day and next time हम इसको retry करेंगे and also with tiny core Linux in CLI. So that's all for today. Thanks and have a nice day.